Ladies and gentlemen, the next aircraft for the flight display is none other than our very own Netra, the eye in the sky. I am squad leader Zufila and I'll guide you through the display of Airborne Early Warning and Control System. Look to your left for the Netra, eye in the sky. हवा से सूचना का संचार करने वाला, हवाई सुरक्षा को जिम्मेदारी देने वाला, विजयी सपनों को पंख लगाने वाला नेत्र स्वयं आपकी नजरों के सामने उड़ान भरता हुआ। नेत्र नाम से विभूषित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत में निर्मित पहला AEWC सिस्टम है। नेत्र का बेस ब्राजील के एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट पर है। Airborne Early Warning and Control System, in short AEW&C, is a capability enhancer with contemporary state-of-the-art technology capable of long-range radar detection, electronic surveillance measures, communication support measures, command and control, battle management and networking through data link with command and control center on ground. The AEW&C system is based on a modified Embraer 145 aircraft from Brazil. All the mission systems installed on this aircraft are indigenous. This, ladies and gentlemen, is a big step in the direction of Atmanirbharta in the field of radar and EW systems. With its unique features of quick deployment, minimal manpower and cost-effective operations, makes it an indomitable network-centric platform. Having achieved operational success, few more such AEW&C systems will be developed by CABS DRDO on Airbus platform. त्वरित तैनाती, न्यूनतम मैनपावर की आवश्यकता, लागत में अभूतपूर्व कमी तथा प्रभावी संचालन की अनूठी विशेषताएं इस एक अदम्य केंद्रीय नेटवर्क प्रणाली में स्थान प्रदान करती हैं। एम्ब्रेयर प्लेटफॉर्म पर 8 EWC सिस्टम दुनिया में हवा में ईंधन भरने के लिए अपनी तरह का पहला उपक्रम है।
And there you can see Netra landing in front of you. Give a huge round of applause for Netra, the eye in the sky. Gentlemen, train your eyes to the left for a first among the firsts. The B-1B Lancer of the United States Air Force, also known as the Bone, will fly past next for the second time in Aero India 2021. The first time it flew here was on the opening day. It is a multi-role, long-range bomber capable of flying a variety of intercontinental missions. The B-1B today is captained by Major Drew Mentor. We have two Tejas escorting the B-1B on either side. These aircraft are flown by Wing Commander Varun Singh and Wing Commander Karthikeya. The B-1B has flown a 26-hour-long flight from Ellsworth Air Force Base in South Dakota and belongs to the 34th Expeditionary Bomb Squadron. The other crew members on board are Lieutenant Austin, Major Jason, and Captain Hiep Du. We await the arrival of the B-1B. This aircraft has carried out 4 in-flight refuelings over a 11,000-mile journey. Your eyes to the left and notice the B-1B escorted by 2 Tejas coming in front of you. Give a big round of applause to the participation of the United States Air Force in Aero India 2021. Flanked on either side by the Tejas, the B-1B once again captained by Major Drew Mentor. A big round of applause for the Bone. Ladies and gentlemen, we come to the close of the morning aircraft flying display. On behalf of Ministry of Defence, we express our gratitude to all our distinguished guests for honouring us with their presence this morning. On behalf of the commentary team, comprising Group Captain Monish, Wing Commander Nimish, Wing Commander Matthew, Squadron Leader Vandana, Squadron Leader Tanya, Squadron Leader Zufila, and I, Flight Lieutenant Ridhima, we thank you and hope you enjoyed being here. Jai Hind. आशा करते हैं आज के इस एयर शो में आप सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। साथ ही एरोस्पेस सेक्टर के बारे में और जाने की इच्छा को भी जागृत किया होगा। नभ को स्पर्श करने वाले नजर नहीं आते, बादलों में कहीं गुम हो, पर यह जमी सलामत है क्योंकि आसमां में तुम हो। रक्षा मंत्रालय की ओर से मैं साभार धन्यवाद करता हूं
समस्त उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय इस समारोह के सफल आयोजन हेतु दिया। कमेंट्री टीम के सदस्यों, ग्रुप कैप्टन मोनीश, विंग कमांडर मैथ्यू, स्क्वाड्रन लीडर वंदना, स्क्वाड्रन लीडर तान्या, स्क्वाड्रन लीडर जुफिला तथा फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिधिमा की ओर से मैं विंग कमांडर निमिष जैन आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।